Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. Work, power and energy is an important chapter of class 11 for CBSE, ICSE and different state boards. In this lecture, I will be talking about power, the part 2 of this chapter. The third part, namely energy, will be done later in a separate lecture. This topic will also be found useful for JEE mains and NEET aspirants. The complete note of this topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Power is defined as the rate of doing work. वर्क करने के रेट को हम पावर बोलते हैं. पावर दो तरह के हैं. एक हमारा है एवरेज पावर. This is defined as the ratio of total work done upon total time taken to do that work. ठीक है. एक होता है हमारा instantaneous power. That means this is the power at a particular moment of time. If delta W is the small amount of work done in a small time interval delta T, where delta T tends to 0. तो इसको हम लिखते हैं dW upon dt. And this is your instantaneous power. ये उसी तरह की चीजें हैं जिस तरह से हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी. We define average velocity as the distance covered upon total time taken to cover that distance. The distance of your school or college from your residence is S, and you take a time t to cover that distance, then your average velocity is S upon t. एक होता है instantaneous velocity. This is the velocity at a particular moment of time. Delta S is the small displacement in a small interval of time delta t, where delta t tends to 0. इसको हम लिखते हैं ds upon dt. And this is known as your instantaneous velocity. This is the velocity at a particular moment of time. व्हीकल में आप देखे होंगे एक होता है ओडोमीटर that records the distance covered by the vehicle, and there is also a needle that moves over the scale showing you the velocity of the vehicle. वो जो दिखा रहा है निडल आपको स्पीड, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है. वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी दिखा रहा है. आप देखते होंगे कि वो निडल जो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है. तो स्पीड कम है तो वो वेलोसिटी कम दिखाता है, ज़्यादा है तो स्पीड वो ज़्यादा दिखाता है. ठीक है. दैट इज द ओडोमीटर रीडिंग. So the odometer simply shows you what? Instantaneous velocity. ठीक है. अब आइए हम देखते हैं how we define power. If ds be the small displacement produced in a body by a force F in a small time interval dt, then the work done is dw is F dot ds. This comes from the definition of work done. So the instantaneous power will be dw upon dt. जैसा हमने देखा यहाँ पहले अभी. Put for dw, this is F dot ds upon dt. So this is F dot ds upon dt. Now ds upon dt is nothing but the instantaneous velocity vi. So pi is F dot vi, where vi is ds upon dt is the instantaneous velocity of the body. ठीक है. If W be the amount of work done in time t, then the average power P average is W upon t. ठीक है. तो हमने देखा what is average power and what is instantaneous power. आइए हम देखते हैं
whether power is a vector quantity or a scalar quantity and what is its dimensional formula. तो पावर को डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी से, एंड सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. दूसरा तरीका देखने का है कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड सिंस वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर thus defined is also a scalar quantity. अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर. देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको. P का डायमेंशन हो गया F डॉट V. ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज mL t का पावर -2 डॉट वेलोसिटी का हो गया L t का पावर -1. So if you open the bracket, this gives you m L square t का पावर -3. ठीक है. So the dimensional formula for power is m L square t का पावर -3, and this is what we have written here. ठीक है. अब आइए देखते हैं what are the units of power. CGS सिस्टम में देखते हैं पहले. CGS सिस्टम में हमारे पास वर्क को हम मेजर करते हैं किसमें. वी मेजर वर्क इन अर्ग. टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, इसलिए पावर कितना होगा अर्ग अपॉन सेकंड. सो दिस इज अर्ग पर सेकंड. ठीक है. सो द पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 अर्ग पर सेकंड if 1 erg of work is done by it in 1 second. SI सिस्टम में देखिए, SI सिस्टम में वर्क जो है उसको मेजर करते हैं जूल में. ठीक है. टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड में. सो पावर कितना हो जाएगा जूल अपॉन सेकंड. दिस इज जूल पर सेकंड एंड दिस हैज गॉट ए स्पेशल नेम वाट. वी राइट इट एज कैपिटल W. ठीक है. सो वी हैव 1 watt is 1 joule per second and 1 joule is 10 to the power 7 erg. So 1 watt is 10 to the power 7 erg per second. So here W stands for watt and not for work. So the power of an agent is said to be 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second. अब आइए हम देखते हैं what are some other practical units of power. One is 1 kilowatt. Kilo means 1000. So 1 kilowatt is 1000 watt, or this is equal to 10 to the power 3 watt. 1 megawatt is, mega stands for 10 to the power 6. So 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. Another is horsepower. So 1 horsepower is written as 1 HP and this is equal to 746 watt. So this is all about power, the average power, the instantaneous power, the units of power and the dimensional formula for power. This is the theoretical portion of power. Now see some examples here. See the first example here. A 2.5 Newton force accelerates a stationary particle of mass 15 gram and displaces it by 2.5 meter. Find the work done and the average power delivered. How to find work? Work done is force dot displacement. So this is F dot S. Since the force and displacement are in the same direction, F dot S is simply equal to F into S, because F and S are parallel to each other. Put the value of force, this is 2.5 Newton. Put the value for displacement, this is 2.5 meter. So the product is 6.25 Newton meter, और this is equal to 6.25 joule. ये हो गया आपका पहला आंसर.
दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड. द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो जब तक समय नहीं निकलता है, जितने समय में ये वर्क हुआ तब तक पावर नहीं निकल सकता है. So how to find power? So for this we have to find the time taken to do that work. So we proceed as follows. If A be the acceleration produced, then we have from Newton's law. F is equal to ma. So acceleration is force upon mass. So force is given to be 2.5 Newton. Mass is 15 gram. So convert this into kilogram. So this comes out to be 2.5 Newton upon 0.015 kilogram. If you divide one by the other, this gives you acceleration as 166.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये निकल गया उसका एक्सेलरेशन. अब इस एक्सेलरेशन से इतना डिस्प्लेसमेंट होने में कितना समय लगेगा ये निकालना है. फॉर दिस वी यूज दिस फार्मूला S is ut plus half at square. Since initially the body was at rest, so u is equal to 0. So if you use this formula here, the first term becomes 0. For S we have 2.5 meter. This is half into, for A we put 166.7 meter per second square into t square. So if you solve for t, you get value of t as 0.17 second. अब समय निकल गया, टोटल वर्क निकल गया. तो हाउ टू फाइंड एवरेज पावर? एवरेज पावर विल बी वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज 6.25 joule and time is 0.17 second. So this comes out to be how much? If you divide one by the other, this comes out to be 36.1 joule per second, or this is equal to 36.1 watt. ठीक है. Now see the next example. An automobile is moving at 100 km per hour and is exerting a tractive force of 400 kilogram weight. What horsepower must the engine develop if 20% of the power developed is wasted? ऑटोमोबाइल है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और फोर्स कितना लगा रहा है? 400 किलोग्राम वेट. सवाल ये है कि यदि 20% पावर डेवलप का वेस्ट हो जा रहा है तो बताइए इंजन कितना पावर डेवलप कर रहा है. तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द पावर अवेलेबल. सो वेलोसिटी इज गिवन टू बी 100 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करना हो हमको मीटर पर सेकेंड में, क्या करेंगे? वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर per hour. So this is 100 kilometer into 1000. This gives you in meter upon hour. 1 hour में 60 minutes, 1 minute में 60 seconds. So this is so much. So this comes out to be 27.78 meter per second. ठीक है. Force is 400 किलोग्राम weight. अब देखिए 1 किलोग्राम weight क्या है? This is the force by which Earth pulls a body of mass 1 kilogram towards its center. So this is 1 kilogram into G. Value of G in SI is 9.8 meter per second square. So this is 9.8 kilogram meter per second square, and this is nothing but Newton. So this is 9.8 Newton. So 1 kilogram weight is 9.8 Newton, and therefore 400 kilogram weight is 400 into 9.8 Newton. So this is 3920 Newton, and this is what we have written here. This is written here. ठीक है. So the power available is force into velocity.
force is 3920 Newton, and this is velocity is 27.78 meter per second. So this is 3920 into 27.78 joule पर सेकेंड, ये हो गया उसका पावर। इस पावर से ही वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पावर है इससे वर्क हो रहा है। यदि हमारा पावर P है तो P पावर का 80% से ही काम हो रहा है, बिकॉज 20% इज वेस्टेड। Pi is simply equal to 0.8 into power developed. So power developed कितना हो जाएगा, 1/0.8 into P. So this is 1.25 Pi. ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, ये ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है 1.25 Pi. So P is 1.25 into Pi. So P will be 1.25, and put the value of Pi here. This is 3920 into 27.78 joule per second. So this comes out to be 136122 watt. Or this is, when converted into horsepower, this is 182.47 horsepower. So this is how simple examples can be solved. I assume you like this presentation. यदि आपको हमारा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.